गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑर्डर रही 8176 डेटेड रही 8/2/20 स्टैंडिंग एनओसी परमिशन इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन गवर्नमेंट कॉलेज अंडर administrative control of higher education department for appearing in various recruitment examination for applying job elsewhere standing permission किंबा एनओसी ପାଇଁ ରହିଛି ଚିଠିଟି being the appointing authority higher education department receives a number of applications throughout the year from the teaching and non-teaching employees working in different government college of the state for according permission NOC appearing in various recruitment examination conducted by UPSC OPSC applying for different job elsewhere अलग आड़े जॉब अप्लाई कला बेले एनओसी पे अप्लाई करूछंती बहुत संख्या रे एज सच एम्प्लॉइज हैव ए राइट टू सीक बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्फ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रांट्स परमिशन एनओसी इन ऑल केसेस इन ए वेरी रूटीन एंड मैकेनिकल मैनर killing valuable time of the department applicants employees are often seen visiting the department for expediting their cases delay in granting permission NOC also sometimes leads to harassment of the applicant or employees तो सेमानकर जेहेतु बेटर अपॉर्चुनिटी को सेमानकर राइट्स अच्छी जीवाई ये कार्य करा जाउछि किंतु डिले केतेबेले एम्प्लॉय चक्कर काटुछंती तांकर प्रोसेस को स्पीड अप करिया पई केते हैरासमेंट होचंती अंडर द 5T मैंडेट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग ए ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग सच परमिशन NOC whereby the applicant or employees would be saved from harassment and department would also be saved from such unproductive work. Accordingly, in supersession of all previous order, executive instruction, the higher education department hereby grants its standing permission and no objection certificate in favor of all OES, college branch, higher secondary branch, office, ad hoc, lecturer, non-teaching employees, समस्तों पाई and other categories of government employees working in various government colleges of the state under administrative control of this department for applying for any job elsewhere for appearing in any recruitment examination subject to the following condition semanako standing NOC ba standing permission दिया जायछि condition किछि रहिछि employee shall not neglect his official duty or responsibility seman तांकर official duty को neglect करिवेनी The employee must take prior permission of the competent authority for leave and headquarter leaving permission ପାଇଁ ସେମାନେ permission ନେବେ The standing permission NOC shall not be construed as permission of department to relieve an employee from its administrative control. In case of selection of the job applied for, the concerned employee must seek approval of this department through proper channel to be relieved from his current service. Notwithstanding anything contained in this order, in the public interest for any other justifiable reason, the department may refuse to relieve an employee from his current service. Chahile department madhya relieve न करि पारे. The standing order shall henceforth be treated as standing permission issued by the department in favor of its employees working in government college, which can be produced by the employees to various recruitment organization को यही कॉपी को मध्य issue So, no individual permission henceforth be required to be issued by this department, nor shall any such application henceforth be entertained by the department. All pending application for grant of NOC in favor of the applicant employees individually are hereby discarded. तो आउ का इंडिविजुअल NOC दिया जीवनी या हायर एजुकेशन निष्पत्ति एमिति मध्य एसएमई रो निष्पत्ति रो आवश्यकता रही NOC ପାଇଁ देखिबा परवर्ती अपडेट तो सबुठ बड़ खबर आसी ओसेपा तरफ तो देखिपारे 30/5/24 रे और चिट्ठी रही एसपीडी पाखु ऑडियो बीओ और HM ऑफ गवर्नमेंट एडेड SSD हाईस्कल मान कंडक्ट PTM SMC SMDC मीटिंग 2024-25 रिगार्डिंग आसी जाइए तो सबुठ बड़ खबर रही In inviting a reference to the letter and subject cited above, it is to intimate you that the parent teachers meeting PTM SMC SMDC meeting for the academic year 2024-25 will be conducted in government and government aided SSD school manakar hebo state as per the academic year 2024-25 calendar. The purpose of this meeting is all round development of students as well as qualitative improvement in education
The parent needs to be oriented in the manifold activities scheme और प्रोग्राम विषय से को ओरिएंटेशन दिज्व एकेडमिक कैलेंडर मध्य कम्युनिकेट हो सारी पूर्व जोटा कि इम्प्लीमेंट होगा जाऊँगी HM's instruction दिज्व activity mentioned in the academic calendar scrupulously. It has been decided to conduct 4 PTM हम वर्ष 20th April गोटे जाइए 10th August 26th October 11th January 2025 throughout the state एटा हबार अच्छी बट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 फर्स्ट PTM कौन है ऑलरेडी बिन कंडक्ट हो सारी 2nd April SA2 रिजल्ट बाबद रही समस्त मन थी ड्यूरिंग PTM एंड SMC SMDC मीटिंग द एजेंडा विल बी डिस्कस्ड एमंग द पेरेंट्स SMC SMDC मेंबर्स SOP स्मूथ कंडक्ट जारी होती एनक्लोज यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू इश्यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द फील्ड फंक्शनरी फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ PTM SMC SMDC SOP जारी हो विदाउट फेल द रिपोर्टिंग फॉर्मेट आसी जाइए बैनर आसी 15 days मध्य डिटेल एजेंडा कम्युनिकेट करा एन अमाउंट ऑफ 750 जहाँ आगुरी 750 टंका पर मीटिंग PAB अप्रूवाल बोर्ड रे अप्रूव हो सारी जहाँकि एक्सपेंडिचर पर्पज जोटा कि ट्रेनिंग SMC SMDC रहिबो द सेम मे बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ बैनर जेरॉक्स एंड अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग द एक्सपेंडिचर मेड ऑन 2/4/24 ताकू मध्य मेट आउट करा खर्चरू द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड PTM विल बी सबमिटेड बाय 25/8/24 सुधा सबमिट करा UC फर्स्ट और सेकंड एवं थर्ड फोर्थ 25/1 सुधा डिपोजिट करा UC योर होल हार्टेड कोऑपरेशन सॉलिसिटेड करिसेंती तो निश्चित भाव देखो गोटे बड़ खबर रही बर्तमान सरकारी स्कूल मानक देखा परवर्ती अपडेट तो आपने कही रखी ये जो चिठीटी मझे होता जो कहुला कि BO DO मैंने पेरेंट डिपार्टमेंट आप TADA पाइबे 20/5/24 आसला IPR डिपार्टमेंट आपण मानक सूचना देते तो यह कौन बड़ कथा नुहे रेम्यूनरेशन आपड़ जमी पाइबा कथा पाइबे एवं तापर एक्स्ट्रा TADA तो TADA रेम्यूनरेशन एंड TADA को मेंशन करके चिठीटी बाहरी तो आपण मानक मुझे देखी कौटा ना आपणकर सेंट्रल गवर्नमेंट चिठीटी को देखी पोलिंग काउंटिंग जोटा होता 150 लेखे रही पोल काउंटिंग तो निश्चित भाव ये गोटे सबुठ बड़ खबर रोची 150 पर हेड सेल बी मेड थिला पोलिंग और काउंटिंग पर्सनल डिप्लॉयड ऑन रिजर्व ड्यूटी सेल आल्सो बी एलिजिबल फॉर रेम्यूनरेशन रिफ्रेशमेंट चार्ज से एलिजिबल थे समटाइम्स द सिक्योरिटी पर्सनल आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड पोल ड्यूटी इन वन डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिक्वायर्ड टू गो ऑन पोल ड्यूटी इन अदर डिस्ट्रिक्ट इन दैट केस दे शैल बी एक्सटेंडेड सिमिलर फैसिलिटी से सिमिलर फैसिलिटी दिज्व तो सब बड़ कथा रही आम देखा कौन रही TADA बाबदर विस्तृत सूचना ये न्यू दिल्ली तरफ रही आपको आगुरी देखु ये सही सिस्टम रे चली आपने निश्चित भाव देखिपारे 25/3/24 5,000 टंका सेक्टर ऑफिसर एवं 2,000 टंका था मास्टर ट्रेनिंग प्रिजाइडिंग काउंटिंग सुपरवाइजर रिसेप्शन 350 पर डे था जहाँकि से आपण वीडियो जरिए देखी ये थिला सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली को थिला देखिपे चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट को थिला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑल स्टेट को थिला पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड TADA बाबद थिला इलेक्शन तो आप देखु इलेक्शन कमिशन इंडिया भेस्टेड विथ द सुपरिटेडेंट्स डायरेक्शन देते कंट्रोल आप देखिपारे इन एडिशन टू रेम्यूनरेशन एडमिशन TADA एंड एनी अदर अलाउंस शैल आल्सो बी पेड एज पर नॉर्म्स बाय देयर पेरेंट डिपार्टमेंट जहाँ को ओडिशा सरकार प्रकारांतरे विलंब हेले भी आनी एतिर भयभीत होबार किसी कारण नहीं आपण रेम्यूनरेशन सहित TADA निश्चित भाव आपण मानक मिल जहाँकि यही सूचना रही
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ TADA ବାବଦରେ। ଅଲ୍ ପର୍ସନ୍ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସୁଡ୍ ବି ପେଡ୍ ଏଜ୍ ଫାର୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍ 100% TADA admissible to person deployed either in advance ଦିଆଯାଇପାରେ immediately within 24 hours of the completion of their duty। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇପାରେ 100% କିମ୍ବା ତାଙ୍କର 24 hours ଭିତରେ ଦେବେ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି 80% TADA ମଧ୍ୟ ପେଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ରିମେନିଂ 20% ଇଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ପରେ ୱିଦିନ୍ 30 days ଦିଆଯିବ। TADA ଏଜ୍ ଆଡ଼ମିସିବୁଲ୍ ସାଲ୍ ବି ପେଡ୍ ବାଇ ବୋଥ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି। The drawing disbursing officer shall not wait for any specific request for the officer appointed for election related duty ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। Treat the appointment order issued by district election officer returning officer itself as a proof request on behalf of officer concerned ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ proof। If after receipt of the advance amount any official for any reason whatsoever does not find it possible to perform the official duty assigned to him, he shall forthwith return the amount so paid and obtain a receipt therefore। ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ପସିବୁଲ୍ ହେଲେନି ଅଫିସିଆଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ବା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପର୍ସନାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେବେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିବେ TADA ପାଇଁ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ରହିଛି ସମ୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ officers or officials may have to appear before courts to attend judicial proceeding which arise on account of duties performed during election, sometimes even after their retirement। In such cases officer or official shall be reimbursed the amount of TADA incurred on account of their appearance before court। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସେମାନେ ବିୟର କରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ରୋଡ୍ ରହିଛି 1500 ଲମ୍ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସେକ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଦର ଦେନ୍ ସେକ୍ଟର ଅଫିସର ଜୋନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ। 350 ପର୍ ଡେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ପର୍ସନାଲ୍ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାଇଁ। ପୋଲିଂ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 250 ପର୍ ଡେ। କ୍ଲାସ୍ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା 200 ପର୍ ଡେ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ଥିଲା ଅଲଗା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ବ୍ୟତୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପର୍ସନ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ 100% TADA ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥିଲା। 100% ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା 24 hours ଭିତରେ ଦିଆଯାଇପାରେ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ର, ଅନ୍ୟଥା 80% ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇପାରେ ଆଉ 20% 30 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ TAର। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ payment of TADA shall be initially paid by the parent and election department as the case may be of the polling police personnel। Other personnel deployed for election related duties shall be borne as per the above mentioned manner। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍।